Okay, good morning all. Can you hear me properly? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Let me share my screen. Okay. Can you all see my screen? Yes. Okay. तो हमने कल क्या देखा था एग्जैक्टली? The concept of accepting the values or input from the keyboard or entering the values during runtime, right? इसमें किसी को कोई डाउट है? Any doubt in this? No. Okay. Can you see my screen? The Eclipse screen? Yes. Okay. So that was the program, right? Here, what we have done is we have created one class and we have imported one package, right, to utilize the method from the scanner class. Okay, again we have to remember the pattern. If we want to access any method, we have to create an object of the class. If we want to use the data or whatever the inside the class, we should import the respective package. Okay, so that's why फर्स्ट लाइन में क्या है, आपका यूजर डिफाइंड पैकेज है जो आपने क्रिएट किया था. सेकंड लाइन में क्या है, दैट वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द प्री डिफाइंड पैकेज व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल. Okay, next we have created one class, created main method, then here we have specified three integers, right? It's called as a declaration, like integer a, b and c. These are three variables. Okay, then I'm just printing one sentence like we have to enter the value of a and b. Okay, okay, enter means next time in console only we have to give that respective value. That means during runtime it will accept the values given by the user. Okay, so for that we have to create an object. So we are creating object of scanner class, right? Because the method next int, it is present in this scanner class. Okay, so we have made that object by the syntax and inside the bracket we are giving system.in because it will accept the input values, right? It's not like system.out where we are getting something as output. So here I am specifying a and b. It should accept only the integer value. So that's why I'm using one of the method from scanner class, that is next int method. Okay, so what it will do, line number 11 and 12, it will try to accept the values of a and b only for the integers. Okay, वो integer ही value accept करेंगे. Okay, and I'm just specifying c as the addition of these both integers. Okay, then next sentence I'm just going to print the addition of the a and b is equal to c. Simple. Okay, यहाँ तक इसमें भी किसी को कोई डाउट है? If you have tried anything as assignment? Okay, now understand the concept. Yeah, कोई डाउट है? Okay. We have seen the scanner class, right? Scanner class. Here what we are doing, we are taking the input from keyboard, or simply we can say accepting the values during the runtime, right? Very simple. Okay, accepting the values during runtime. Okay, now if you'll observe carefully which type of operation we have done here. अगर मैथमेटिकल आप सोचोगे तो अपने हमने यहाँ पे क्या किया है इन लाइन नंबर 13, we have added the two variable, right? Addition, the plus symbol here, it will show the addition. देखिए प्लस सिंबल का मीनिंग कैसे चेंज होता है. ओके,
For example, in line number 13, this plus symbol is showing the addition operator for these two integer a and b, whereas the same plus symbol in line number 14 will indicate the, ये क्या यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? Yes, what it is indicating? Yeah, very good. It is indicating the concatenation over here, right? So देखिए symbol एक ही है, but you can see the meaning are different, right? Meanings are different as per their uses. Okay. Okay. So here I want to ask you that in this program we have done only one arithmetic operation, that is addition, right? We have used the only one arithmetic operation as addition. Okay. Now if I want to use all arithmetic operation, okay, for example for 2 I want to make subtract, for 3 I want to use multiplication, for 4 for example I want to do the division as well. Okay, then how we can do this in this program? What is your logic? Like I want to see the input as addition of these two numbers, subtraction, multiplication as well as division. Any guesses? Like what we can do there? It's simple, right? My requirement is what? मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शनैलिटी या मल्टीपल सिनारियोज चेक करने हैं. मेरा प्रोग्राम तो एक ही है, राइट? जस्ट आई वांट टू यूज द मल्टीपल फंक्शनैलिटी. अगर if you are not doing the good practice, what you can do, you will create 4 classes as of this. एक क्लास में आप एडिशन करोगे, एक क्लास में आप सब्सट्रैक्शन करोगे और एक क्लास में आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करोगे. बट इट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, राइट? So what we should do? I want the operations like all operations. Addition भी होना चाहिए उसमें, subtraction भी होना चाहिए, multiplication और division. So this indicate like कि मेरी requirement ऐसी है जहाँ पर मुझे multiple operations perform करने हैं और multiple scenarios है. So what we should do here exactly? कोई गेस? Okay, we will try. Okay, all multiple ways. Okay, can I create C is equal to, sorry, C is equal to A minus B? It is not giving error, right? Yes. Okay, chalo. Okay, then what will be the output then? Now during, if I will check the output, what the output I can get? चलो वो भी ट्राई करते हैं. Enter the value of A and B. In console I am trying to enter the value of A as 30. Enter value of B as 10. Enter. Now I am getting the addition of A and B is 20. So you want to change the sentence? This one? What we should do? Okay, it is accepted. C is equal to A minus B. 30 minus 10, 20. So this time you want to change the sentence, is it? Yes. Subtraction of A and B. Okay, if I will change it as a subtraction, then what about this A plus B? Even I want the addition as well, right? Yes. Okay, if even I want the multiplication, even I want the multiplication. Now what this time will happen? It will do the last operation. Okay, you can just see.
Here we are entering the value of 20 as a first variable and again 10 as a second variable. Enter. It will give you multiplication. Whatever the instruction you are given and in the last or previous line, that it will accept, right? But my aim was I want to perform the operation of addition, subtraction, multiplication, division, like all arithmetic operations. What we should use for that? रिजल्ट स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. Okay, yeah, we will try that as well. Okay, you are saying you want to use the different variables, right? Okay, I will specify different variable as int d. Is that fine? Yes. Okay. Okay. Now I want subtraction. Then what I should say here? The subtraction, right? The subtraction of a and b is the new variable you want to print. That new variable you made as d. Right? For example, you made the d as a new variable. Okay, we'll try this as well. Okay, we want variable first as 20, next variable as 15. Okay, subtraction is fine. But what about the remaining operations? Here you are performing one operation at one time only, right? Okay, if you want to change again one more print addition, but it will accept, it will print only this statement, right? प्रिंट करने के लिए भी अलग अलग ये करने पड़ेंगे ना फिर. Okay, can we try this as well? Now. Okay, first we want addition, right? You are saying? Yes. Okay, we'll try that. The addition of a and b is the new variable you have already made as a c. Correct? Okay. Okay. Here what the value you are putting for any variable a, मान लीजिए आप 25 put कर रहे हो and then 12. Okay. So here it is giving the 2 addition, right? Okay. So here what we are doing, we are creating more variables and also the more statements. Okay. अब इसमें issue क्या होता है? It will directly print whatever the sentence you will give. Again मान लीजिए you have created 4 operations but you just want 3 operations. और second time आपको 2 ही operation चाहिए. So that time you will think about the conditions, right? अगर addition बोल रहा हूँ तो addition print होना चाहिए. मुझे चाहिए subtraction तो subtraction print होना चाहिए. Here it will execute all the sentence in sequence because we are not putting any condition here, right? But sometimes in your requirement आपकी functionality में काफी variations है, but at one time you are interested to execute just 7 possibilities or 6 possibilities or whatever the number, okay, and it is random. So अब तब जाके ये print statement कट नहीं कर सकते या उसको comment नहीं कर सकते, right? If you don't want, you cannot comment it. It's not a good practice, right? अब यहाँ पे बस यही execute होगा line number 17. But every time we cannot go in the code and do the changes. So for that reason, we are using the concept of switch. Okay, we are using the concept of switch. Okay. अब switch समझ लीजिए, it's again one type of condition like that only. Okay. Flow control जिसको हम कहते हैं ना, that like that only. Okay. So we will understand the syntax of this. Okay. We have to type in bracket keyword which is reserved keyword in Java. Then like body of the switch. Okay. Body of the switch. How many possibilities or how many variations of the functions you have? We should consider each and every action or possibilities as a case. Okay, so again CASE is again one reserved keyword in Java. So case 1. Okay, case 1,
you want to semicolon, print, you want to print you want to print, addition of you what? want Two to print variables, the addition, a plus b, addition of what? Two variables, a plus b. correct? Okay, It will print. it will print, Next correct? case, It will print. Okay, next case, next is case number 2. next is case number 2. Case number 2. Okay, Here case what I number want 2. Here what I want I is want to print the I want to value print of the value of minus b. minus b. Okay. Okay, Like that. like that, like that. I can use all the 4 sentences. I can use all the 4 All the sentences. 4 operations. Okay, all the 4 But operations. See, But user is see, giving one यूजर इज गिविंग वन इनपुट वैल्यू एज वन, तब आपका जावा कोड क्या एग्जीक्यूट करेगा? एडिशन. दे रहा है 2, तो अगर आपका यूजर इनपुट दे रहा है 2 तो अगर हम आपका input दे रहे सब्सट्रैक्शन हैं होगा. 3, तो मल्टीप्लिकेशन होगा. अगर हम इनपुट दे रहे हैं अगर हम 3 4 दे रहे हैं तो division, मल्टीप्लिकेशन like होगा. अगर हम 4 दे रहे हैं तो डिवीजन होगा. लाइक दैट. we But don't want to execute If any of the we operations. don't want to execute any of the operation, मान लीजिए कि अपने sometimes input 1 मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इनपुट 1 to 4 देने के अलावा आपने 5 दे दिया, जो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है. मेरे पास बस अभी Right? 4 ऑपरेशंस करने मेरे पास हैं बस अभी और आप 4 ऑपरेशंस करने हैं मुझे, और आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो 4. so that will Okay? be not executed. So that will be not क्योंकि आपने executed. specify भी नहीं किया. ओके, क्योंकि आपने स्पेसिफाई भी नहीं किया. जावा के लिए बट जावा के लिए हमको उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट केस. चारों केस नहीं मेरे मान लीजिए ये चारों केस नहीं मेरे पास. केस 2 केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और वॉट एवर इट मे बी नंबर. मेरे पास नहीं करने ये सभी केस मेरे पास नहीं करने हैं मुझे. ये केस नेग्लेक्ट ही करने मतलब सो एट दैट टाइम आई विल यूज द डिफॉल्ट ये कीवर्ड केस अगेन सेम पैटर्न. अगेन सेम पैटर्न नेक्स्ट केस कोलन. आई विल प्रिंट नेक्स्ट केस आई विल प्रिंट लाइक, आई विल प्रिंट लाइक इट इज इनवैलिड एंट्री. इट इज इनवैलिड एंट्री. मान लीजिए आपने यहाँ पे इनवैलिड एंट्री मतलब आपने 6 नंबर दिया है, बट 6 नंबर पे कोई ऑपरेशन है ही नहीं. राइट, देयर इज नो ऑपरेशन लाइक 6 नंबर. सो इट विल गो टू द डिफॉल्ट वन. अब 6 दीजिए, 7 दीजिए, 8 दीजिए, वॉट एवर इट मे बी, इट विल गो टू द डिफॉल्ट वन. Now what will happen here? Java code will go into this in this switch statement, and it will try to do the operation of all these case 1, case 2, case 3 or whatever it may be. ये यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट इन दिस? Okay. Okay, now we will see through the Eclipse. Okay, now we have any package. Here we are using any new class, new Java class. Okay, so I'm giving the name as switch example. Okay, here I have created one main method, sorry, one class. Okay, now what is the next time what we have to do? We have to create main method. So what is the syntax? public static void main. Yes. Okay, that we have created main class. Okay, now just see carefully what I'm trying to do here. Okay, I want to use the scanner class. So what I should use, what I should import? Use the keyword as a import. And what is the package name? Java dot util dot scanner. Right? Okay, I'm importing this package to use the scanner class. Now I need to create an object. So what is the syntax? Class name, any variable with new keyword, again the class name in bracket, as it will accept the input value. So I'm typing system dot in. Okay, we have to terminate the sentence. We have to terminate the sentence. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए that we have seen the same one. Okay, now मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे 4 ऑपरेशंस करने हैं. ओके, सो
I will use this option to give the user, मतलब यूजर को मुझे बताना है कि यहाँ पे आपको 4 ऑपरेशन कर सकते हो. So I will give it in this way. In first line I am going to print, one will indicate as addition. Okay. Okay. Now in next line user should get the information like if you are selecting or opting option 2, it is going to do the subtraction. Okay, it is going to do the subtraction. Similarly, I will assign one number as a 3 for the multiplication. Okay, user will see if user is giving option as a 3, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा? Multiplication. Similarly, if user is giving the value as a 4, it will make the division. Okay, ये सिंपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई ऑप्शंस पूछे नहीं है ना यूजर को. Here just I am printing it. Here I am just printing like 1 addition, 2 subtraction, 3 multiplication, 4 division. Okay. Now here I am giving option to user enter your first number. Okay. So what is the syntax? Just I will give the instruction in the print method, that is enter the first number. First integer. Okay. Now my condition is it should accept only the integer value. So I will define it as a int a. Okay, and it is accepting only the integer value. So how can I make it through method? That is object sc. I will get all the methods. I am just selecting next int. Okay, it should accept only the integer value. Sentence terminate. It shows कि मेरा integer a जो है that is my first number, it should accept only the integer value. Okay. Now here I want to enter the second number. The second integer. Sorry. Then how? If I am considering it as a int b, then what instruction I should give? Object dot next int. Right? Again it should accept only the integer value. यहाँ तक मैंने क्या किया है, बस यूजर को ये प्रिविलेज दिया है कि he can enter the a value and b value. Now user should enter his choice. Okay, I am asking him to give the choices. Enter the choice of what? Choice of operation. आपको जो भी ऑपरेशन करना है, that is 1, 2, 3 or 4. Okay, and the last variable I am going to define it as a int c, which is nothing but, अब यहाँ पे मैं उसका एडिशन यहीं पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ. अगेन जस्ट आई एम सेइंग दैट इंट c should also accept or get the value as integer only. Okay, any reason why I'm saying c should be also integer? मैंने पहले तो नहीं किया था ना ऐसे. आई एम जस्ट गिविंग c is equal to a plus b, but this time I'm just putting it as an integer as well. c should get as an integer value. Any guesses? Because multiplication or division result may be in float. Okay, not exactly the multiplication but the division may be. देखिए दो इंटीजर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन will be the integer only, right? But 25 divided by 12 it becomes in the decimal, right? So that's why I'm defining int c is equal to that. Int c is equal to means it should also accept the values as integer. अब वो मैं दिखाता हूँ आपको ड्यूरिंग ऑपरेशन how it may be. Okay, यहाँ तक वेरी सिंपल है. मैंने बस ऑपरेशन के लिए चॉइस दी है ऑन द स्क्रीन, और यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ फॉर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड इंटीजर c जो मेरा ऑपरेशन का आउटपुट होगा a और b के लिए, उसको भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि इट शुड आल्सो एक्सेप्ट द वैल्यूज एज अ इंटीजर. ओके, नाउ आई विल यूज द स्विच. ओके, इट इज रिजर्व्ड वर्ड, सो कीवर्ड है तो वो हाईलाइट हो जाएगा. ओके, हियर आई एम यूजिंग वन ब्रैकेट एंड गिविंग द बॉडी. ओके,
we are getting error because switch statement should accept some input parameter, और वो input parameter में देता हूँ this c because मैं operation किसके लिए कर रहा हूँ, ये सभी c के लिए कर रहा हूँ, so I will mention here c. Okay, now I will make case 1. Case is also one of the keyword, so वो highlight हो जाएगा case 1 semicolon. In next line what I'm trying to print, that is a minus a, sorry, first operation is what, a plus b. Okay, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? This is what your case 1. Okay, now case 2. What is the case 2? I am considering as a minus b, subtraction, right? I am just considering as a subtraction. Okay, case 3 I am considering it as a multiplication, a star b. Okay, and case 4 I am considering as a divided by b. All 4 operations. Okay, all 4 operations. And if user is giving any other integer other than 1 2 3 4, if user is giving 5, so again I should get a message like it's not a valid choice. So for that reason I am using the default case. I am using the default case. I am using the default case as what? It should give a message that you have given the invalid choice. You are doing it as a invalid choice. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है in this? Any doubt in this? Yes, no? Can you hear me? सर सी क्यों लिखा है स्विच? Okay, okay, I will explain it also. Okay, देखिए स्विच मतलब क्या हो रहा है कि आप किस लिए ये सभी पॉसिबिलिटीज देखना चाहते हो. ओके, आपको स्विच ये जो कंडीशन है ये अप्लाई करनी है, किसके लिए करनी है? अब हम किस लिए कर रहे हैं? जो हमारा इंटीजर c है जो a और b के अरिथमेटिक ऑपरेशन से ही डिफाइन होगा, जो a और b के अरिथमेटिक ऑपरेशन से डिफाइन होगा, उसके पॉसिबिलिटीज क्या बन रहे हैं वही तो हम स्विच में देख रहे हैं, है ना? वो देख रहे हैं हम केस 1 हो सकता है एडिशन, केस 2 हो सकता है, जो भी हो. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग c हियर. मैं किसकी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे? इंटीजर c की, राइट? यस और नो? यस, बट वो सर हम जब प्रेस करेंगे 1 2 3 4 वो वैल्यू सी में जाएगी ना? वो तो अभी मैंने आउटपुट दिया ही नहीं ना. जस्ट गेट वन थिंग कि यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने अभी आउटपुट दिखाई नहीं आपको ना, क्या आउटपुट आएगा. बट आप जो सिंटैक्स के लिए पूछ रहे हो, लाइन नंबर 16 में मैंने ब्रैकेट में सी क्यों दिया? इफ यू आर नॉट गेटिंग इट विल शो एन एरर. ओके, तो मैं यहाँ पे इंटीजर सी क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज मैं सी के लिए सभी ऑपरेशन देखना चाहता हूँ. केस 1 एडिशन, केस 2 ये सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एज वेल. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay, now we'll try to run the code. Just carefully observe what is happening. Okay, okay. See, we got first choice की 1 क्या दिखा रहा है आपको? एडिशन. 2 दिखा रहा है सब्सट्रैक्शन. मतलब यूजर को ये पता होगा यहाँ से कि मैं अगर 1 प्रेस करूंगा, मेरी चॉइस 1 देता हूँ तो वो वहाँ पे एडिशन होगा, राइट? 2 करता हूँ तो सब्सट्रैक्शन होगा, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन. ओके, नाउ एंटर द फर्स्ट नंबर. I am going to enter the first number as 100. मान लीजिए. Again it is saying enter the second number. Enter the second number that I am doing as a 20. Okay. Now enter the choice. You want choice as addition. So मैं अभी case 1 execute करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे enter कर रहा हूँ 1. That means क्या होना चाहिए? Addition होना चाहिए. Enter.
Okay. Can you see the output here? Yes. Are we getting all the output? Yes, sir. Yes or no? See, मैंने दोनों दिए नंबर 100 एज अ फर्स्ट इंटीजर, b एज अ 20, और यहाँ पे 1 ये मेरी चॉइस इंडिकेट कर रहा है. ओके, दिस इज नॉट c माय डियर, this is the choice. Like one number it will give you the a plus b, b 2 होगा तो माइनस. ओके, लाइक दैट. तो देखिए एडिशन है इनका 120, सब्सट्रैक्शन 80, मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2000 एंड दी डिविडेंड. ओके, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आई एम गेटिंग 5 एज ए इंटीजर. And also it is executing the last case also. Though I have given the choice as a 1 only, I have not given any other choice other than 1 to 4. मैंने नहीं दिया यहाँ पे. Still is trying to execute the default also. अब यहाँ पे तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ. मेरा पर्पस क्या था? मुझे सभी ऑपरेशन करने हैं. यहाँ पे सभी ऑपरेशन हो चुके हैं, बट यूजर ने तो दिया था चॉइस 1. यूजर ने तो चॉइस 1 दिया था ना. यहाँ पे आपने डिफाइन 1 किया है. एट अ वन टाइम ही कैन गिव जस्ट 1 चॉइस, राइट? एंटर द चॉइस एज अ 1. बट मुझे एग्जीक्यूट करना है इनको एज पर द चॉइस गिवन बाय द यूजर. As per the choice given by the user. For that reason, again the concept of break will be come into the picture. जो break कीवर्ड हमने देखा था, कहाँ पर देखा था break कीवर्ड हमने? Where we have seen the break concept? Where? Loop. For loop. For loop. Okay. Now see carefully. I am just adding the break keyword after each and every case. Okay. अब डिफॉल्ट के लिए आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. दैट डजंट मेक एनी मीनिंग. ओके, आफ्टर डिफॉल्ट आल्सो यू कैन टाइप अ कीवर्ड ब्रेक, बट उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता. Okay, now just carefully observe. I have given the break keyword after each and every case. Case number 1, case number 2, case number 3, case number 4. Okay, now this time I will try to run this code. Okay. Okay, I am getting instruction like 1 addition, 2 subtraction, up to 4. There are something happening as a arithmetic operation. Okay. Now I want to enter the first number. My first number is 100. Okay, it's asking me to enter the second number. Second number I am entering as a 20. It is asking me the choice. Now what type of choice you want to make? Consider you want to just make addition. Can you see? Only the addition will happen here. Yes or no? Is I am getting all 4 options? Am I getting all 4 options? No. जो मैंने चॉइस दिया है वही मिल रहा है. ओके, वी विल ट्राई विद दिस केस नंबर 2 आल्सो. अब मुझे केस नंबर 2 एग्जीक्यूट करनी है, नॉट 1, नॉट 2, सॉरी, नॉट अदर्स. ओके, enter the first number 100, enter the second number 20, enter the choice 2. It will give only the subtraction because of this break keyword. और वो भी देखिए हमने हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड लगाया. फॉर एनी केस इफ यू आर नॉट पुटिंग दिस ब्रेक कीवर्ड, मान लीजिए आपने ब्रेक कीवर्ड नहीं किया है अप्लाई, देन व्हाट विल बी द चेंजेस? दैट विल आल्सो बी सी. अब मैंने केस नंबर 1 के लिए ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया. ओके, now what will happen? First number as a 100, second number as a 20. Okay, I am giving the choice as 2. मान लीजिए it will go to that only. Why? Because see, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, but I am giving the particular choice. Okay, I am giving the particular choice, so it will directly jump to this. But अगर मैं ब्रेक कीवर्ड कहीं पे भी नहीं लगाऊंगा तो it will directly execute all the cases. What is the meaning of break in the for loop? For loop में क्या हो रहा था? It will come out of the loop. Instantly, right? It will come out of the loop instantly, and it will neglect or it will not execute the current iteration. जो current iteration है वो execute नहीं करेगा वहाँ. ओके, सिमिलरली यहाँ पे स्विच केस में क्या होता है, आपका इंडिविजुअल केस 1, केस 2 ये डिफाइन होता है आपके चॉइस से. दैट मीन्स यू आर गिविंग वॉट एवर द चॉइस. Okay, whatever the choice you are giving, that will be only executed. Okay,
1 to 4 तो हमने डिफाइन किया है. Okay, we have given the value from 1 to 4. Now this time I want to give any invalid entry. Invalid entry मतलब for example first number is 100, second number is मान लीजिए 40. I am giving the choice now as a 7, which is also one integer, right? और वो इंटीजर सी नहीं इंडिकेट कर रहा है, वो बस मैं चॉइस नंबर बता रहा हूँ जो मैंने स्पेसिफाई किया नहीं है एज अ केस 7. आई हैव नॉट गिवन एज अ केस 7. So it will show me the default case. The default case is if you are putting other than 1 to 4. If you are putting other than 1 to 4 which is already defined, और आप कोई अलग choice indicate कर रहे हो तो it will not throw an error, but for that we have the default case. मतलब आपके कोई भी केस नंबर मैच नहीं कर रहे हैं तब आपका एक डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, वहां पर आप जो भी अप्रोप्रिएट मैसेज है वो शो कर सकते हैं. गॉट दिस? So why we are using switches when we have the multiple functionality. ओके, और मल्टीपल सिनेरियो आपको एक ही कोड में करने हैं. देखिए इसके लिए आप 4 कोड भी लिख सकते थे. एक कोड में आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ईच. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर डिफाइनिंग द सेम इंटीजर, वी आर डिफाइनिंग द सेम इंटीजर. ओनली फॉर द इंटीजर सी वी आर इंटरेस्टेड टू मेक डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन. ओके, सो यहाँ पे तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लिए, बट आपको अभी क्या करना है? यू हैव टू मेक असाइनमेंट फॉर स्विच यूजिंग इंटीजर वैल्यू लाइक 1 to 7 फॉर वीक डेज. मान लीजिए अगर केस 1 है तो मेरा प्रिंट होना चाहिए टूडेज डे इज मंडे. इफ माई केस इज 2 इट शुड गिव द टूडेज डेट इज ट्यूजडे. अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का कुछ मीनिंग नहीं है. ओके, देखो स्कैनर क्लास तो हमने कल पढ़ लिया है, तो माई करंट असाइनमेंट इज नॉट फॉर द स्कैनर क्लास. मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ओके, आई जस्ट वांट यू टू यूज द स्विच केस टू प्रिंट द डिफरेंट कंडीशंस एज पर द यूजर इनपुट. यूजर इनपुट मतलब आप कंपेयर करोगे कि इंटीजर वैल्यू अगर 1 है तो इट शुड गो टू द केस नंबर 1 जहाँ पे मंडे प्रिंट होना चाहिए. अगर आप इंटीजर वैल्यू को कंपैरिजन में 2 रखते हो तो it should give you the case 2 as a Tuesday. Current day is Tuesday. Same up to 7 it will give the Sunday. But अगर आप इंटीजर वैल्यू 8 डिफाइन करते हो या 9 डिफाइन करते हो which is beyond 7, so in default I should get a message like invalid day or invalid choice. Whatever आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो you can print. असाइनमेंट सभी को क्लियर है? सर स्कैनर क्लास लेना पड़ेगा ना इनपुट देने के लिए? चॉइस नहीं, स्कैनर क्लास इनपुट दूंगा किसके लिए मैं दे रहा हूँ? जब इंटीजर को ऑपरेट करना है. अब मैं वहाँ पे स्कैनर क्लास नहीं यूज करूंगा, मैं वहाँ पे फॉर और इंटीजर इज इक्वल टू 1 जैसे हमने मार्क के लिए किया था ना. ओके, फॉर दिस लुक. ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप. देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन तो ये दी है. ओके, जस्ट गिव मी व्हाइल लूप. फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 10 है तो उसके कारण ये लूप में जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे व्हाइल लूप नहीं करेंगे आप, वहाँ पे आप स्विच करोगे. बट यहाँ पे a to 10 और a to 1 और आपको स्कैनर क्लास यूज किए बिना बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वैल्यू अगर मैं 1 देता हूँ और केस 1 आपकी अगर दिखा रहा है मंडे, तो आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए? इफ यू रन दैट कोड यूजिंग स्विच, तो आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए? मंडे. यहाँ पे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. डोंट यूज स्कैनर क्लास, आप यहीं से इनपुट दीजिए डायरेक्टली थ्रू द कोड. अगर यहाँ पे मान लीजिए आप 7 दोगे और आप अप्रोप्रिएट स्विच केस लिखते हो. ओके, स्विच इन ब्रैकेट a और आप लिखते हो केस 1 मंडे, केस 2 ट्यूसडे ऐसा, और आपने 7 लिखा है, तो इट विल शो यू द संडे व्हेन यू विल रन. गेटिंग इट और नॉट? यस सर. डोंट यूज स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास का आपने असाइनमेंट कर लिया होगा, दैट इज गुड. बट हियर यू कैन प्रैक्टिस दिस सेंटेंस आल्सो. मतलब जो मैंने अभी दिखाया वो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एक बार ट्राई कीजिए. एंड जस्ट टू गेट व्हाट हैपनिंग इन स्विच, just type all 7 days or any day which you want depend upon your this integer value. आप beyond 7 दोगे तो आपको डिफॉल्ट केस से आना चाहिए कि this is not a valid day. Similarly you can do for month as well.
two. Still any doubt? No, sir. Okay. Thank Thank you. you. So So we have seen seen the the switch case, okay? और और उसमें भी जो break break keyword है उसका meaning समझ लीजिए, right? So it will use or execute for special और respective case only. और वो case के बाद क्या करेगा? वो next case के iteration के लिए नहीं जाएगा, though you are giving any number of cases. Okay? Now we will start very important concept from the Java. Oops concept. What is full form of oops? Anybody knows? Object oriented programming. Object oriented programming. Okay. नाउ देखिए oops कंसेप्ट ये आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और while using Selenium also that time is also it's very important. That time also it's very important. So from now onwards ये जो कंसेप्ट है इसके लिए कंपलसरी आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, ओके? It is not like always through the program only you will get the concept. कुछ concept के लिए आपको लिखना पड़ेगा. So I'm expecting कि you are writing only the notes, at least running notes, okay? For each and every day we are writing something, okay? अगर यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ तो आप डेफिनेटली आपको भी आपके नोटबुक में या नोटपैड में राइट करना पड़ेगा, ओके? Okay. Now we'll start with the first oops concept from the Java, that is inheritance. Anybody knows about inheritance? Anybody knows about inheritance? Here we inherit the method from parent class to child class. Okay. सिंपल उन्होंने बता दिया कि हमको एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास में, अब ये पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है बताता हूँ, बट सिंपल डेफिनेशन की एक क्लास से दूसरे क्लास में मुझे उसकी मेथड्स यूज करनी है. फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास वी आर यूजिंग द मेथड्स, ओके? अब अंडरस्टैंड करने का वो कंसेप्ट, ओके? देखिए क्लास क्या होता है, जहाँ पे हम लिखते हैं कोड, ओके? मान लीजिए आपने क्लास बनाया जिसका नाम है कार, ओके? नाउ ईच एंड एवरी क्लास हैज सम मेथड्स, डेटा टाइप इन दैट, ओके? उसमें क्या होने चाहिए, कुछ मेथड्स होंगे. तो सिमिलरली वो मेथड्स हम या जो भी प्रॉपर्टीज है उस क्लास की वो हम मेथड से शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड, अगर कार है तो मान लीजिए वहां पे कुछ कलर मेथड है, they are having some color method, okay? This is the syntax and having some statement for this. ये मेथड के लिए कुछ स्टेटमेंट है. ऐसे ही कार में कुछ और एक मेथड है, that is public void, मान लीजिए wheels, it has wheels, so it is also one of the property, it has some method for that, and also it will have some statement, okay? That is the one class which I have created, right? The class which I have created is the car, okay? Now again I have created one more class, that is class मान लीजिए A, okay? Now it has again some methods, for example public void any method, for example it has ABC method, okay? It has some statement, okay? Now this is your class A, this is your class A. Now for like this class A I have multiple classes, okay? I have मल्टीपल क्लासेस. अब ये कंसेप्ट हम इसीलिए देख रहे हैं कि अब जब हम मल्टीपल क्लासेस से डील करते हैं तब क्या होता है, ओके? नाउ नेक्स्ट क्लास इज कंसिडर्ड एज अ बी, इट्स मेथड एज एनीथिंग x y z and it has having some statement, okay? Now in this class A
I want to utilize the color method. How can I utilize? Creating object of car class. Okay, very good. Again, the will method also is there, right? मुझे क्या यूज करने हैं क्लास ए में? मेथड यूज करने हैं कलर मेथड और विल मेथड, जो ऑलरेडी प्रेजेंट कहाँ पर है? कार नाम के क्लास में प्रेजेंट है। और सिंपल, मुझे ये मेथड यूज करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों? Car. यस। सो व्हाट इज द सिंटैक्स? Class name reference variable. रेफरेंस वेरिएबल मान लीजिए आपने कुछ बनाया, ओके, ट्रिपल टी, और मान लीजिए यू आर जस्ट मेकिंग एज अ एनीथिंग like a, okay, and you are giving again new keyword, name of the class and the symbol. Okay, now here we can use this method like this, right? A dot, correct है कि गलत है? Yes. Now we can use this. Okay, in class B as well I want to use this color and will method. What should I do? What should I do? Create object. Same? You are saying same, right? Now what is the conclusion from that? Like if you are creating 1000 classes and you want the properties from this particular class, you need to create 1000 times the objects, right? You have to create the objects 1000 times. Yes or no? Yes. Or is there any way? मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है अभी के लिए और मुझे मेथड यूज करनी है, बट यू कैन नॉट यूज। अगर आप ऐसा मेथड लिखोगे तो वो एरर देगा, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो ये मेथड इसको पता ही नहीं है क्लास ए को, बिकॉज क्लास ए और क्लार क्लास का कोई रिलेशन नहीं बनाया आपने। देयर इज नो रिलेशन, दे आर इंडिपेंडेंट क्लासेस, राइट? तो यहाँ पर अगर आप कलर मेथड को कॉल करना चाहते हो तो इट विल थ्रो एन एरर कि ये मेथड अननोन है, अननोन मेथड इज देयर, ओके, और इनवैलिड मेथड। बट मुझे तो मेथड यूज करनी है, सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आई कैन यूज दिस कलर मेथड एंड विल मेथड। बट सिमिलरली इफ आई वांट टू यूज दिस मेथड्स इन मल्टीपल क्लासेस, लाइक 1000 क्लासेस, 100 क्लासेस, ओके, 1000 क्लासेस, 100 क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे एक क्लास में है आपके कंप्लीट लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मान लीजिए। अब मुझे जितने भी ऑपरेशंस करने हैं, फंक्शनलिटी चेक करनी है, उसके लिए मैंने इंडिविजुअल क्लास की कोड लिखे। अब वहां पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड तो चाहिए होगा ना, राइट? टू चेक ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी आई शुड लॉग इन टू द एप्लीकेशन। फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? उस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से जो भी मेथड्स है मेरे फॉर यूजर नेम पासवर्ड, दैट आई शुड कॉल। बट creating an object for 10 times okay, 20 times okay, you can create it, you can remember कि मुझे किस क्लास का बनाना है, but for 1000 times or 1000 times or more than that, it's not possible. Okay, it's not possible means syntactically it is possible, but it's not very easy task. आपको हर क्लास में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और तभी जाके आप उसके मेथड कॉल कर सकते हो for that respective class. Okay, so to avoid this, the concept of inheritance comes into the picture. तब inheritance का concept आता है आपके पिक्चर में, okay? अब inheritance में होता क्या है? Here we are trying to get the properties of one class into the another class. Properties of car class मुझे किस में चाहिए? क्लास A में चाहिए। So inheritance can be implemented, okay, by using the keyword. Again एक keyword है extends। extends नाम का कीवर्ड है जो क्या करता है? इनहेरिटेंस को आपको इम्प्लीमेंट करके देगा इन जावा। ओके, नाउ सी केयरफुली। Here class A, I'm typing it as a extends keyword। extends of what? किस क्लास को ये इनहेरिट करना चाहता है? That is what?
क्या है यहाँ पे इनहेरिटेंस? मुझे कार को करना है, तो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा? आई जस्ट वांट राइटिंग द नेम ऑफ द कार, दैट क्लास. Okay, I am just using the methods from car, so I am giving it as a, sorry, I am using the extend class car. Okay, I am using this keyword extends, and I am using which class to be extended? That is this class, car class. अब जब आप extend keyword use करोगे, you are implementing the inheritance. So now what we should do, we are just creating the object of this class only. अब यहाँ पे देखिए, मुझे क्लास A का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, मुझे क्लास कार का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है. आई एम जस्ट मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास A itself. Okay, so क्लास का नाम क्या है? A. Any objects I am making it, and again the new method name A. Now this time I have created the object of this class, my dear, in which I am going to extend it, and directly I can call any method from this class. मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया, इस क्लास का बनाया. फॉर इनहेरिटेंस यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ओनली फॉर वन टाइम, जो नाम ही है आपका oops. Okay, just wait. Hey, can you hear me? Yes, sir. Okay. So if I'm using the keyword as a extends, it will get all the properties from this class. Like यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट तो बना रहा हूँ इसी क्लास का, एंड एक्सटेंड यूज की मैंने यूज किया है. So that's why what it will do, it will extends means it will inherit all the properties in terms of method, in terms of variable, data variable, सभी को inherit करेगी, और हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे in class A. So depending upon this, we have just some types of inheritance. अब इसको हम कहते हैं SLI, single level inheritance. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सिंपल वर्ड है, मीनिंग है कि जब हम किसी एक ही क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं कोई अदर क्लास में. जैसे कि मान लीजिए क्लास ए में बस हमने कार नाम की क्लास के ही प्रॉपर्टीज को क्या किया है? इनहेरिट किया है. वी हैव जस्ट इनहेरिटेड द प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू द अदर क्लास. इट इज कॉल्ड एज अ SLI, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? What was the statement, or sorry, what was the concept we are just discussing? इसमें कोई डाउट है अभी के लिए? No. Okay, so again there are more types of inheritance, like single level, multi level, multiple level. वो मैं concept wise कल दिखाता हूँ आपको. Tomorrow also we will have class. Is it fine? Yes. ओके, सो कल भी हमारा क्लास सेम टाइम पे होगा, 7 to 8. ओके, सो कल मैं आपको कंसेप्ट वाइज जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल के बाद मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस, दोनों का वर्ड मीनिंग अलग अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट वाइज, एंड अगेन वी विल सी थ्रू द इक्लिप्स आल्सो. ओके, बट बिफोर दैट जो भी प्रीवियस कंसेप्ट हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड डू द प्रैक्टिस. ओके, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. So if there is no doubt, we will stop here. Any doubt?